माय फादर यूज्ड टू से कि जो भी आपने पढ़ा है, भले ही वो इवन दो फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, फॉर्मल मास्टर्स नहीं है, बट ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी पढ़ाई-लिखाई कहीं वेस्ट चली जाएगी। द एफर्ट्स यू हैव पुट इन कहीं न कहीं, कभी न कभी इट विल कन्वर्ट इंटू रिजल्ट्स। Hi everyone, welcome to another interview of RBI 2023 Topper Series. आज का इंटरव्यू क्यों स्पेशल है और क्यों आपको देखना चाहिए एज एन एस्पिरेंट ऑफ आरबीआई एग्जामिनेशन। मेरे साथ आज बैठे हैं लक्ष्य। नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन द मूवी लक्ष्य, और उस मूवी में इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन अ पर्सन हु इज क्लूलेस अबाउट हिज लाइफ, हु lacks focus. But when he finds his focus, he realizes that all the challenges that are thrown at him are actually opportunities. Now, Lakshay sitting in front of me was not clueless, but when he found his focus, that is where uh, the contribution of converting his challenges into opportunities began. So, his success in RBI examination is not a result of just studying for phase 1, phase 2, and interview. It's a culmination of a lot of things that he's done in the past 3-4 years. और अब जाके वो सारी चीज़ें एक एक करके उनको रिजल्ट दे रही हैं या सक्सेस में कन्वर्ट हो रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस लक्ष्य। थैंक यू सर। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टॉक अ लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको पता लगे कि लक्ष्य ने क्या क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, कहाँ काम किया है, क्या काम किया है। दे हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट यू एंड देन वील स्टार्ट विद द डिस्कशन। Thank you for the kind words, sir. Just to introduce myself, I'm Lakshay Verma. I have done my bachelor's in commerce from Shri Ram College of Commerce. I completed that in 2020. उसके बाद I was a UPSC aspirant. I gave certain serious attempts in UPSC. I was able to reach the interview stage as well. But कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती थी, उसकी वजह से I wasn't able to convert. But thereafter, I thought, how can I contribute to the same goal in a different capacity? So that is where I started exploring certain alternatives. I have been working with business chambers for the past 2 years. उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि कोई और capacity में if I can contribute to the nation, that would be great. And that's where I found RBI grade B examination, and I prepared for it, but it was uh, some years of experience and the things I've studied in the past that contributed to the success. What do you owe this success to? Primarily अगर नंबर वन प्रायोरिटी में रखूं तो तुम्हें क्या लगता है किन किन चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया तुम्हारे सक्सेस में? So there were certainly multiple factors. Education, my education background being the topmost factor. थोड़ा कॉमर्स से रिलेटेड था तो आई हैड द अंडरस्टैंडिंग. सेकेंडली आई डिड स्टडी फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई विल से दैट एक वर्क एथिक जो बीइंग इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड नॉट केयरिंग अबाउट द रिजल्ट, वो कुछ सालों बाद अपने आप उस एटीट्यूड में आ गया कि अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ इट्स नॉट बिकॉज कि ठीक है मेरे को इस चीज़ का ये आरबीआई एग्जाम में आएगा, ये समथिंग, या फिर ये किसी एग्जाम में आएगा, बट इट वाज मोर ऑफ अ प्रोसेस कि ठीक है ये मैं पढ़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं काम आएगा, मेरे को नहीं पता कहाँ आएगा, बट इट इज़ फॉर माई ओन डेवलपमेंट, फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग. हम लोग नॉर्मली पेरेंट्स, फ्रेंड्स, आवर क्लोज वंस, वी थिंक ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम देम मेंटली व्हेन वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशंस। तो हमें लगता है कि सबसे दूरी बनाना ज़रूरी है अगर आपको पढ़ना है तो। डिड यू हैव समथिंग सम काइंड ऑफ अ सिमिलर experience, or did you actually use their energy for your own benefit? Sir, I think they are the biggest support. Your parents, your family, your friends. ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. You just have to prioritize yourself. In my small success that I had, I think my parents, my family, my friends, and especially my mentors and teachers, they had a big role in where I'm today. uh, you found failure in UPSC multiple times. You were very close to being selected, but then things started going south. Normally ऐसे failures के बाद
चाहे वो यूपीएससी हो, whatever it might be, a lot of people lose hope and we tend to blame that failure or we tend to blame ourselves and we forget to move ahead. What was that prime motivation or the driver that allowed you or enabled you to move ahead after that failure and then to convert that failure into a success? सर, माय फादर यूज्ड टू से कि जो भी आपने पढ़ा है, भले ही वो इवन दो फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, फॉर्मल मास्टर्स नहीं है, बट ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी पढ़ाई-लिखाई कहीं वेस्ट चली जाएगी. The efforts you have put in, कहीं न कहीं, कभी न कभी, it will convert into results. So that was the motivation behind, not getting disheartened by failures and moving on, exploring certain other things where I can actively contribute. जब हम यूपीएससी, व्हेन वी टॉक अबाउट यूपीएससी वर्सेस आरबीआई, वी हैव अ प्रीकंसीव्ड नोशन और assumption दैट अरे यूपीएससी वाला है इसलिए सिलेक्शन हो गया. यूपीएससी वालों को पता है कि यूपीएससी के अलावा कितनी एफर्ट लगती है तैयारी में टू कन्वर्ट इट इनटू अ रैंक. So what were the areas where you find difficulties, where you found difficulties, where you found problems while when you started to prepare for RBI, thinking that okay, this is something that I've never experienced in UPSC, so let me start from scratch. So what were those areas? सर, यूपीएससी कहीं जगह तो हेल्प करता है, बट कहीं जगह इट इज़ अ टोटली अ न्यू गेम ऑलटुगेदर. फॉर एग्जांपल, जनरल अवेयरनेस इन यूपीएससी एंड आई मीन करंट अफेयर्स इन यूपीएससी एंड जनरल अवेयरनेस इन आरबीआई आर टोटली टू डिफरेंट बॉल गेम्स. वहाँ पे थोड़ा एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग की साइड फोकस होता है. यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू ग्रास्प, यहाँ पे फोकस होता है. तो एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस लाइक क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और द फेज वन एग्जामिनेशन पर से, I found myself to be a fresher. कोई added advantage नहीं था. I had to prepare. I had to put in the work and be ready for that examination. So let's break it down one by one. If we have to talk about maths and reasoning only, then how did you prepare for these two areas, because you're not prepared them in advance in your civil services prep? Uh, Sir, one thing I was able to understand in the phase one examination that this is a qualifying examination. जैसे आपकी स्ट्रैटेजी होती है हर एग्जामिनेशन की, इधर मेरे को टॉप नहीं करना है. आई जस्ट हैव टू क्वालिफाई. आई नो मेरा जीए थोड़ा सा मैं स्ट्रॉन्गर कर सकता हूँ. क्वांट और रीजनिंग आई वाज एबल टू आइडेंटिफाई कि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है. सो माय आइडिया वाज कि क्वांट और रीजनिंग के कुछ कुछ सेक्शंस जो मुझसे हो रहे हैं, मैं उसे इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क से अगर क्वेश्चन आया, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा टाइम एंड वर्क से, आई वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व. सो सम selective study I did in these areas that I think I was able to qualify phase one. Okay, and what about general awareness? Because you said that it's completely different than civil services. Yeah, for general awareness, I had to take some help, and especially Anuj Jindal classes were really helpful in that preparation. I read newspaper daily, but उसके अलावा भी मेरे को पता था कि जिस हिसाब से PYQ हैं, वो न्यूज़पेपर से एड्रेस नहीं हो पा रहे. So I rigorously followed um, uh, RBI 247 and PIB 247 और monthly magazine आपकी, उसमें selectively highlighting, but it was according to PYQ patterns कि ऐसे questions आते हैं तो इसी के according my focus should be. वरना पढ़ने को तो बहुत सारा information है. How and how much did you focus on previous year questions? Because that is an area that we often miss out on, and that is why I came out with that book, because we also felt that probably we are also missing out on something. तो कैसे previous year questions को पढ़ा और कितनी ज़्यादा relevancy उसकी होती है according to you? Sir, PYQ, I think PYQs are the base of your study. अगर syllabus एक मार्क है, PYQ आपको बता देगा कि कैसे कहाँ जाना है. तो आपकी जो बुक है PYQ की, आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल सोर्स. मेरी हमेशा वो स्टडी टेबल पे रहती थी. आई हैड टू रेफर. आई आई मीन फेज़ 1 में, फेज़ 2 में पहले मैं PYQ उठाता था, उसके बाद अपना पढ़ने बैठता था. वरना इन्फॉर्मेशन तो स्कैटर्ड है, बट सेलेक्टिवली पढ़ना इज़ दैट इज़ बेस्ड ऑन PYQ. Okay. Let's come to consistency. Let's change the direction a little bit, because I observed that you prepared for UPSC, and then you also started preparing for RBI.
along with your working. So you must have been or had to be very consistent with everything to be able to do it all. So what role did it play, and how did you make sure that as a working aspirant you were able to maintain that consistency? Sir, if even if you're working or you're not working, consistency is the key. मेरे केस में डिफ़िकल्ट है थोड़ा वर्किंग एस्पिरेंट के साथ, क्योंकि ऑफ़िस का स्ट्रेस भी होता है थोड़ा, और ऑफ़िस के बाद पढ़ना या फिर उससे पहले पढ़ना थोड़ा एग्ज़ॉस्टिंग होता है। बट इफ़ यू यू नो कंपार्टमेंटलाइज़ योर टाइम, जैसे मेरा फिक्स आवर्स थे थोड़े से कि मैं ऑफ़िस के बाद इन घंटे पढ़ूँगा ही पढ़ूँगा। मैं अपनी लाइब्रेरी जाऊँगा, मैं पढ़ूँगा ही पढ़ूँगा। सो वहाँ से कंसिस्टेंसी एक प्रोसेस में आ जाती है धीरे-धीरे करके। और सिंस आई हैड थोड़ा-सा यूपीएससी वाला, तो कंसिस्टेंसी थोड़ा स्टार्टिंग में ही यूपीएससी एस्पिरेंट को अपनी लाइफ में लानी पड़ती है। तो वो थोड़ा पहले से भी था, और इवन आफ्टर वर्क आई ट्राई टू कंटिन्यू द सेम। The students who are working right now and thinking of preparing or already preparing for RBI, ऐसे बहुत सारे हैं जो सोचते हैं कि we want to be consistent with our prep, but they're unable to find that sweet spot. So saying it is easy कि I'll study after work or before work, but doing it is actually difficult. Is there any way of breaking that wall of not doing it and thinking about it? Did you actually work upon something to be able to find that sweet spot? सर, आई हैड माय ब्रेक्स अलाइन्ड, कि मेरे को पता है कि मैं इस टाइम से इस टाइम मेरा ब्रेक होगा। आई विल मीट माय फ्रेंड्स, या फिर कुछ भी मैं हैंग आउट करूँगा, आई विल हिट द जिम। कुछ ना कुछ वो एक ब्रेक कंपार्टमेंटलाइज़ था कि इस टाइम मेरे को मेरा ब्रेक टाइम है। तो आई थिंक प्रायोरिटाइजिंग योर ब्रेक एंड फन एक्टिविटीज़, लाइक ऑन संडेज़ आई डिडंट यूज्ड टू स्टडी। मैं संडे हमेशा बाहर जाता था। यानी वीकेंड आई नो फॉर अ वर्किंग एस्पिरेंट इज़ इम्पोर्टेंट, बट मेरे लिए वो भी इम्पोर्टेंट था कि दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड इट री-एनर्जाइज़ेज़ यू। लेट्स कम टू थ्री इम्पॉर्टेंट एरियाज जो मुझे लगा कि आपके प्रिपरेशन से हम लोग निकाल सकते हैं फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स: experience, learning, and observation. Now let's talk about them one by one. Let's start with experience. What do you think, and how do you think the experience of your working with Chamber of Commerce helped you? And whatever student is working, whoever student is working right now can also apply the same mindset to be able to extract something out of his work and use that experience in his examination. Sir, I think work gives you real experiences, on ground experiences. I was associated with the PhD Chamber of Commerce and Industry. Uh, तो उसमें आई वॉज एबल टू मीट अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री वेटरन्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स। आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। तो उनका पर्सपेक्टिव समझ के थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में लाना, थोड़ा अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना उनके अकॉर्डिंग, या फिर फॉर एग्जांपल इस बार ओएनडीसी पे एक क्वेश्चन आया था। आई हैव मेट द सीईओ ऑफ ओएनडीसी थ्रू थ्रू माय वर्क प्रोफाइल। सो आई थिंक मेरा जो आंसर लिखने का स्टाइल होगा, क्योंकि मेरे को ओएनडीसी का थोड़ा इन डेप्थ पता था, और एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो शायद न्यूज़पेपर से पढ़ाई कर रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मैं वो चीज़ लीवरेज कर रहा था क्योंकि मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी। एवरीवेयर देयर इज़ अपॉर्चुनिटी आपके वर्क प्लेस में। वर्क प्लेस में इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। कहीं वर्क प्लेस पे इफ़ यू कैन कोट योर मैनेजमेंट एग्जांपल्स, या फिर कुछ समथिंग यू कैन लीवरेज, आई थिंक इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ओके, सो दैट इज अबाउट एक्सपीरियंस। चाहे वो एक्सप्रेशन हो या फिर लोगों से मिलके हो, यू आर एबल टू यूज दैट एंड यू डिड यूज दैट इन योर एग्जाम. लेट्स कम टू लर्निंग, बिकॉज एग्जाम खाली एक्सपीरियंसेस से या ऑब्जर्वेशन से नहीं होता. यू हैव टू learn from your workplace, but otherwise also you have to sit and learn a lot of things, अगर हम literal sense में लें तो. So what did you learn from your life of the past 2-3 years, and also how did you learn for this examination, and how did it work in your favor in the exam? Let's start with learning of life, the struggles in the past 3-4 years. सर, लर्निंग इन लाइफ में आई वुड लाइक टू रिटरेट दैट एक प्रोसेस के साथ लगाव होना,
कि कोई बात नहीं, रिजल्ट आएगा जब आएगा। बट अभी मेरे मेरे हाथ में क्या है, वो चीज़, वो वाला एटीट्यूड कुछ यूपीएससी वेटरन्स के पास आता है, मतलब कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा। बट अभी तो मेरे को वर्क वर्क इन करना है। तो दैट वाज द मेजर लर्निंग दैट आई वाज एबल टू portray in this examination as well. Okay. Let's come to observation now because that plays a major role as well. So, ऐसे कुछ instances where you feel that you were able to observe what's happening with you, what's happening with other students out there, and that's why they're failing. Let's say, अगर हम खाली एग्जाम की बात करें, and in your work environment as well, कुछ ऐसी observations जिन्होंने शायद contribute किया हो towards this particular attempt. For the examination part, I think the observation that played a crucial role was that कि मेरे को पता था कि मेरा जो ऑप्शनल था कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का, इट हैज हैड अ मेजर रोल इन द फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एग्जाम, द फेज 2 पेपर। तो मैंने अपनी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स है उसे लीवरेज करा इस एग्जामिनेशन में थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। यानी मैं देख रहा था कि कहाँ मैं इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, जो मैंने एग्जांपल्स उधर पढ़े कैसे मैं इधर कोट कर सकता हूँ। सो दैट इज़ हाउ आई थिंक ऑब्जर्वेशन वाज क्रूशियल। और ऑब्जर्वेशन लाइफ जो भी आपके साथ हुआ है आफ्टर 2020 टिल 2023 3 years कोविड एट द सेम टाइम यूपीएससी यू नो अटेम्प्ट्स एट द सेम टाइम तो इतने अच्छे कॉलेज से निकलने के बाद नॉर्मली ऐसा होता है कि यार कुछ बड़ा ही करेंगे लाइफ में बिकॉज एवरीबडी इन योर सर्कल इज डूइंग बिग थिंग्स तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम देयर दैट हेल्प यू आउट हियर सर, वन मेजर ऑब्जर्वेशन ऑफ द पीपल हु हैव मेड इट बिग, उन्हें कोई इतना ज़्यादा प्राउड नहीं था कि यानी मैं इतने बड़े कॉलेज से पढ़ा हूँ, आई एम ग्रेजुएट, या फिर पीपल आर प्राउड कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ उस चीज़ में। तो मेरे दिमाग में ये था ही नहीं कि मैं एसआरसीसी से पढ़ा हूँ, लाइक आई मेरे दोस्त देर बैगिंग सो देर डूइंग सो गुड इन लाइफ, बट मैं कहाँ पे हूँ। मेरे को बस अपने से लेना था। आई यूज टू फोकस ऑन माई सेल्फ रादर देन the other people around me. You did not make a lot of notes, and that is very unlikely because a lot of students spend a lot of time on making notes. How did you tackle that? Because as an aspirant who's working simultaneously, it is something that other aspirants can also learn from you. तो notes ना बना के कैसे पढ़ाई को एक स्ट्रक्चर में रखना है? How did you do that? That's an interesting question. So, I think मेरे पास already pre-made notes थे for certain sections of phase 2. Yet again, I leveraged those. But phase 1 के लिए I didn't make any notes. उधर I think आपका spotlight initiative जो है, I used to just underline and highlight stuff. मेरे को पता है, मेरे को मैं इसे 2-3 बार पढ़ूंगा, मेरे को बैठ जाएगा दिमाग में। तो जो एग्जिस्टिंग स्टफ है कोचिंग क्लासेस का, कुछ कुछ वो मैं लीवरेज करने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास टाइम की कमी थी, अगर मैं अपने नोट्स बनाने बैठता तो बहुत टाइम लग जाता। उसी में ऐड ऑन करके, या फिर जो मैंने RBI 247 में पढ़ा, मैं एक्चुअली ऐसे करता था कि मैं थोड़ा सा पहले फरवरी मंथ का स्पॉटलाइट आने देता था, उसके बाद फरवरी मंथ के RBI 247 देखता था और उधर ही ऐड ऑन कर लेता था अपने नोट्स। पहले मैंने वो स्पॉटलाइट पढ़ ली, तो दैट सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी। एंड डेली न्यूज़पेपर तो था ही, जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी इंडियन इकोनॉमी और इकोसिस्टम के बारे में। सो दैट्स हाउ आई लीवरेज्ड। न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर बहुत ओवररेटेड लगता है मुझे बहुत लोगों स्पेशली एग्जाम के लिए इट इज़ रेलेवेंट बट उसको यूज़ कैसे करना है वो आई थिंक वहाँ पे गैप है वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ इट what role did newspaper play and how specifically did you use your newspaper for your preparation सर, न्यूज़पेपर इज एबल टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग। वहाँ पे सर्टेनली आपको एग्ज़ाम रेलिवेंट स्टफ शायद नहीं मिलेगा, वो आपको पीआईबी में मिलेगा, बट एक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आई थिंक इट प्लेज अ मेजर रोल कि व्हाट आर द इंटर, जब आप एक इमेज देखते हो, यू आर एबल टू सी अ बिगर पिक्चर। आरबीआई ने अगर रेपो रेट कम किया है तो क्यों कम किया है,
यानी what were the multiple factors that were running in the background. So ऐसी understanding वो चीज़ न्यूज़पेपर डेवलप करता है. Totally relying on coaching notes could be, आप फेज 1 तो कर लोगे, उसमें जीए सेक्शन थोड़ा फैक्चुअल आता है, बट फेज 2 में और इंटरव्यू में जब आपको वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, दैट दैट्स वेयर आई थिंक न्यूज़पेपर really helps. Let's try to talk about the interview for a while. Interview में what exactly happened, because you have such a strong profile. तो जब गए तो किस तरह के questions पूछे? What were your expectations before going in, and how did you prepare for the interview? One by one, let's talk about that. Okay, so first I think I'll talk about how did I prepare for the interview. मेरा इंटरव्यू स्टार्टिंग में ही आ गया था. I didn't had much time, but I was sure that कि मेरा इंटरव्यू, since my profile was a little interesting, मेजरली मेरे प्रोफाइल पे चलेगा और थोड़ा बहुत शायद आरबीआई और करंट इकोसिस्टम पे चल सकता है, बट आई हैव टू बी वेरी सॉलिड इन माय प्रोफाइल. सो द फर्स्ट स्टेप वाज टू प्रिपेयर माय प्रोफाइल, माय वर्क प्रोफाइल, द थिंग्स आई हैव रिटन इन माय biodata form. So that was the preliminary step I took. Coming to what happened in the interview, I think it was a very interesting interview. They focused on multiple aspects, but कुछ मेजर एस्पेक्ट्स मेरी ऑब्जर्वेशंस थी. फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर लुकिंग फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. उन्होंने मुझसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे. फॉर एग्जांपल दे आस्क्ड मी व्हाट इज गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, और अगर द कंसेप्चुअल पार्ट कम्स इन हियर, कि अगर मैं ये प्रिंसिपल को हटा दूं अकाउंटिंग प्रैक्टिस से, व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दैट्स अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन. तो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी देख रहे थे, वेदर आई हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी. Secondly, they were looking, since my profile was very different, they were also looking कि कुछ फेक तो नहीं रहा है ये अपनी प्रोफाइल में. सो दे वर गोइंग वेरी डीप कि ठीक है, आई हैड रिटन दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ कोर टीम मेंबर ऑफ स्टार्टअप 20 इनिशिएटिव, बट उसमें व्हाट वाज योर रोल. मेंबर तो कोई भी हो सकता है, बट आपका रोल क्या था, आपने क्या करा था, उसमें काउंटर क्वेश्चन. दे वर गोइंग इन डेप्थ, इन डेप्थ, इन डेप्थ. यू आर लर्निंग. सो interview was very interesting. It was I would say 70 to 80% based on my profile. और वहाँ वो मेरे को बाउंस मतलब बाउंसर्स की जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी. आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि ठीक है, इन्होंने ये मेरी प्रोफाइल पे चल रहा है, तो मैं इसे कैसे जो मैंने करा है दिखा सकता हूँ अच्छे से. कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं, बट अच्छे से जो भी आई डिड. सो आई थिंक दैट वर्कड इन माय फेवर इन द इंटरव्यू. Does it happen because you've had that experience कि कोई फ्रेशर जाएगा या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा जाएगा, तो इंटरव्यू पैनल का बिहेवियर या थॉट प्रोसेस, डू दे हैव, अकॉर्डिंग टू यू, इट माइट बी इनकरेक्ट, इट माइट बी करेक्ट, बट व्हाट इज योर टेक ऑन whether they prefer a certain kind of candidate or not? So, sir, this I have a very interesting experience, since when I appeared for UPSC interview, I was a fresher. I was straight out of college, and when I appeared for an for the RBI interview, I was a working professional. So, एक फ्रेशर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं. मतलब ठीक है, अगर वो कुछ ब्लंडर कर रहा है, बट दे आर एबल टू फोरगो दैट. सेम हैपेंड इन माय यूपीएससी इंटरव्यू जब मेरा हुआ था पहले. उधर मैंने 2-3 ब्लंडर्स करे थे, काफ़ी स्कीम्स के नाम गलत बोल दिए थे, स्टफ लाइक दैट. बट व्हेन यू आर एक्सपीरियंस्ड, दे एक्सपेक्ट अ लेवल ऑफ मैच्योरिटी फ्रॉम यू. ठीक है, दैट्स वेयर यू कैन नॉट गो रॉन्ग. That's where you have to prove that yes, I am mature enough, I have a working experience that is quite relevant, and I'm bringing something on the table. So दोनों के pros and cons हैं, और I think expectations ही बढ़ जाती हैं, and you have to, if you are able to fulfill that expectation, they'll obviously mark you well. Okay, let's come to the last question, and I believe very important one for majority of the students out there, कि यूट्यूब पे इतना सारा फ्री मटेरियल, इतना सारा, हर कोई, बहुत सारे लोग हैं जो शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं. हाउ डिड यू यूज़ all the free material out there on YouTube and on Telegram to segregate the clutter from the actual useful stuff? And there must have been instances जहाँ तुम्हें लगा होगा कि यार ये सोचा तो था बड़ा अच्छा है, लेकिन 2 दिन के बाद लग रहा है शायद इतना यूज़फुल नहीं है. So how did
that journey go? Sir, over here I'll say that PYQ came to my rescue. My preparation was totally guided by previous year questions. आपकी book थी previous year question की. It was my Bible for this examination. मैं वही पढ़ता था जो मेरे को रिलेवेंट लगता था. पहले मैं PYQ एनालाइज करे और मैं छोटे छोटे नोट्स बनाता था कि स्कीम्स में वो फॉर एग्जांपल एलिजिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं. कोई स्कीम का एलोकेशन रिसेंट होगा तो उसके फिगर्स क्या हैं उस पर फोकस करते हैं. सो PYQ बिकेम माय माय सोर्स और उसके अकॉर्डिंगली ही आई वाज एबल टू कट द क्लटर अकॉर्डिंगली. Wonderful, wonderful. Any advice that you would want to give to the students? Anything that you want to say out loud to the students and to anyone out there? I'll say just don't lose out or get disheartened by failures. I'll say just put in your efforts, and someday or the other it will get you the results you need. And of course, I think believe in God. मैं मानता हूँ कि जो मैं आज बैठा हूँ, I think it's because of the blessings of the Almighty, nothing else. He was it was meant to be. So that's it. Wonderful. So with this, let's come to the end. Here's a small gift for you. Thank you so much, sir. And I hope आप सबको, सारे स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस कॉन्वर्जेशन से मिला होगा. And I'm sure that is going to help you in your upcoming RBI examination or in any examination, whatever you write. The philosophy of Lakshay, the way he prepared, the way he used his experience and how he could start from zero again and again to be able to make it happen and clear such a difficult examination. I'm sure it's going to inspire you. So if you like this small discussion, make sure that you subscribe to the channel, and also make sure that you become regular and you watch all the other sessions that we have. And I'm very certain they're going to be very helpful in your journey as an aspirant. I'll see you again. Till then, all the best. Take care. Bye-bye.